what was India's contribution in development of vaccine, in vaccinating people, in taking vaccine through vaccine diplomacy to Mm-hmm. other countries which were relatively poor, which vaccination was prevalent in India Mm-hmm. more than 2000 years before Jenner. India is a world leader in both pharma, in production of medicine, generic medicine especially, and also vaccines. So, but many people, even in the country, were not aware of our contribution. The world leader in vaccine production, we produce 62% of the vaccines produced worldwide. Mm-hmm. Every Almost every second child out of the three gets India made vaccines in the world because it was a question of life and death at that time. Mm-hmm. So, and our vaccines were the most visible thing which went from the country to many friendly countries in Africa, in Asia, and in even in Europe and America. Hello everyone, I am Sajjan Yadav and you are watching Indian Masterminds. Recently, my colleague Pallavi had the opportunity to speak with senior IAS officer Mr. Sajjan Yadav, who currently serves as the additional secretary in the Ministry of Finance. He is also a best-selling author known for bringing India's vaccine policy and its growth to the global stage through his book India's Vaccine Growth Story, while also highlighting the nation's remarkable legacy. Additionally, he has chronicled inspiring UPSC journeys in his book called Scaling Mount UPSC. During their conversation, they discussed his inspiring journey, the insights behind his book. During their conversation, they discussed his inspiring journey, the insights behind his books, and uncovered some fascinating lesser known facts. So, without any further ado, let's dive into their engaging discussion. Hello, sir. Thank you so much for this Right. opportunity and welcome to Indian Masterminds. Thank you. Okay, so now since we are talking, I just want to know, like after so many years of service, what do you think Mhm. is the best part of being an IAS officer and what is the worst part, if you can share with us? See, there are only good parts and best parts. There are no worst parts. Okay. So the best part is that you get that kind of opportunity, you get that kind of resources to make change in the lives of people. That is very, very important because at the end of the day, when you go home, then and when you sleep at night, you get a good night's sleep because you have done something good every day for people. You have done something good every day for the country. And that kind of job satisfaction you will not get in any job. Secondly, apart from job satisfaction, Mhm. also the variety which is there in our service or in IAS, Mhm. so which is immense. No, I think in no service, no career, people get that kind of variety in Mhm. their jobs. So totally we get to work in totally different fields. And third, the opportunities for career development which we get in the service, Mhm. the skill set upgradation to study abroad, come back, apply it, Right. और टू स्टडी विद इन इंडिया. तो इसमें जो है तीनों चीजों में बहुत मैं कहूंगा कि दिस ऑल दीज आर वेरी वेरी गुड पार्ट्स और द बेस्ट पार्ट्स यू कैन से द फर्स्ट वन इज द बेस्ट अदर्स आर गुड. Okay. So there are no cons of being an IAS officer. Everything नो is व्हाट? no नो cons. कॉन? Yeah, just like नो कॉन? हाँ, हाँ, देयर इज नो कॉन. यस, बिल्कुल. अगर मेरे को तो दोबारा भी मौका मिले कि करियर आज से शुरू करना है, आपको चूज करना है कि किस में जाना है, सो आई विल गो फॉर आईएएस बिकॉज आई थिंक दैट इज द बेस्ट service in terms of opportunities, in terms of job satisfaction, in right. terms of chances or opportunities to work for the people. Right. And sir, you have served in diverse roles across multiple ministries, Hmm. states, because आपका Hmm. cadre भी AGMUT है. So which Yes. assignment or which state work challenged you the most? And if also you can tell us why. See, the segments which challenge you are the ones which are really difficult, Hmm. hard, but they're I will say, the output and the job satisfaction is much more. So Mhm. I very fondly remember my days when I worked in Arunachal Pradesh, very Mhm. remote parts of the country. Mhm. I was
posted right on the bordering district of Tawang and Mhm. other districts also. So I have been deputy commissioner in two districts in Arunachal Pradesh. So I think that was the best part and the most challenging ones too, because first you have to get to know the culture of the place, the Mhm. politics of the place, the requirements of people, and then you can make a difference because it was a single line administration. Everyone reports to the deputy commissioner. Mhm. So you can really do very well by implementing the schemes in very targeted way Mhm. by pursuing your own priorities, because if your priority is education in the district or improvement of health facilities in the district, so then it gives you that kind of opportunity. Right. And third, I would say that there's a lot of army around in because it's a bordering district. Mhm. So in you interact a lot with the army, you get to know their difficulties, you get to know their working style, you get to know their leadership styles. So Mhm. you mutually learn from each other. So coordination with army, coordination with the paramilitary forces posted there. So Mhm. apart from development, these kinds of things which are not available in any normal districts are available. Those kinds of opportunities and challenges in these remote parts of the country. Right. So आपकी पहली पोस्टिंग ही अरुणाचल से शुरू हुई या it was some other place? Now, my first posting was Mizoram. Second Okay. posting was Arunachal Pradesh. Okay. And So, तब Arunachal Pradesh, I was posted as deputy commissioner, or you can call collector or district magistrate in हम्म two districts. So, right. in terms of challenges, in terms of opportunities, in terms of job satisfaction, हम्म वो हर एक आईएएस ऑफिसर का होता है कि जो कलेक्टर या डीसी के समय जो काम किया है वो हमेशा फॉन्डली रिमेम्बर करते हैं लोग इवन आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो Right, huh? That's the word, a totally different experience. So, sir, on a lighter note, like AGMUT में there are so many states and union territories you get to work in. If given a chance, अगर आपको settle होना हो किसी एक जगह, तो which place would it be? सी सेटल तो आपको बहुत चीजें देखनी होती हैं, आपको हाँ, मेडिकल फैसिलिटी देखनी है, आपको जॉब not like, अपॉर्चुनिटीज देखनी है. but like just say you said Tawang because I have seen Tawang in pictures only, but that place excites you. But obviously there are challenges in living there or settling there, but आपका मन कर Yes. जाता है कि वहीं रहना चाहिए पहाड़ों में. So is there any place like that if you हाँ. not? See, अगर real situation है Hmm. where you are not dependent on other facilities and other requirements, so I would say Tawang is ideal place Hmm. because of the beauty of Tawang, because of the calmness, इतना शांति वहाँ पे है, इतना Hmm. अच्छा कल्चर है, इतने अच्छे लोग हैं, पूरा बुद्धिस्ट एरिया है, Hmm. इतनी अच्छी मोनेस्ट्रीज हैं, इतना अच्छा लैंडस्केप है. तो ये Right. बोला जाता है कि तवांग इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. तो अगर Right. ऑफ कोर्स वहाँ पे मौका मिलेगा तो रह सकते हैं. Hmm. और दूसरा, मैं दमन दीव में भी रहा तो स्पेशली दीव बहुत खूबसूरत है. दीव बिल्कुल टोटली डिफरेंट है. इट इज कोस्टल टाउन, वेरी स्मॉल टाउन. तो Right. उसमें भी अगर मौका मिले विद गोल्डन बीचेस एंड सच गुड हेरिटेज, तो वहाँ पे भी इसी यही फायदा है एजीएमयूटी का. हाँ. यहाँ Right. बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस मिलता है, डाइवर्स प्लेसेस में आप रहते Right. हैं. So, you wrote this book, India's Vaccine Growth Story, after, about our country's journey in immunization post-COVID. So, I wanted to Mm-hmm. know what led you to, write this book? Like, what was the starting point and how this unfolded? Yes, so this is my first book, India's Vaccine Growth Story, and recently I published my second book, so we'll talk about it later. Yeah. But vaccine story, the idea to write India's vaccine growth story came during COVID time, of course, because Mm-hmm. everybody was talking about vaccines and Mm-hmm. we were all very eagerly waiting for vaccines at that time when this idea was conceptualized. So it was a very tough situation, as you know, that there was lockdown. People were so scared of coming out. People were so scared of interacting with each other. There was fear. You were listening sirens of ambulances all the time. Mm-hmm. So at that time, everyone was looking forward to have a vaccine because that was the only way to defeat that COVID-19 virus. Right. So I started reading about vaccines just for curiosity initially. Mm-hmm.
And when I read, I found that there are so many stories, interesting anecdotes behind development of vaccines. The history of vaccines is very, very old. Mm-hmm. And India has done a lot, a lot, not only for itself, but also for other countries of the world in vaccines. So I was surprised to know at that time that we are the world leader in vaccine production. We produce 62% of the vaccines produced worldwide. Mm-hmm. Every, almost every second child out of the three gets India-made vaccines in the world. And with the help of vaccines, we have eradicated such dreaded diseases like polio and smallpox. So Mm-hmm. when I read about vaccines, so I found very interesting stories. I found important contribution of the country. So I thought, let me document it. Mm-hmm. So my book is basically it is kind of a history of vaccines filled with stories of development of various vaccines, the sacrifices of scientists who developed. They used to test on themselves. They had that kind of courage, and they used to test on their family members. So that was one. So first part of the book is regarding development of various vaccines, Mm-hmm. and then in the I would say the part two of the book is how COVID emerged Mm-hmm. and what was the situation, how the entire world got together to defeat the virus, and what was India's contribution in development of vaccine, in vaccinating people, in taking vaccine through vaccine diplomacy to Mm-hmm. other countries which were relatively poor, which didn't have the resources to produce vaccines, didn't have the technology to produce vaccine. And third part of the book is about vaccine hesitancy, which was an important issue at that Right. time, Mm-hmm. vaccine leadership, and of course, vaccine diplomacy. So the idea germinated at the time of COVID-19, Mm-hmm. but it is not only about COVID-19, it I is a general history of vaccines and how we defeated COVID. Yeah, I think the subtitle of the book is From Cowpox to Vaccine Maitri. So Yes. it's So, basically sums up the whole history of that. I also wanted to talk about, sir, this Vaccine Maitri. Do you think that it has redefined India's global healthcare leadership? of course, yeah. First is, see, India is a world leader in both pharma, in production of medicine, generic medicine especially, and also vaccines. Hmm. So, but many people, even in the country, were not aware of our contribution. Hmm. So, definitely, one is the awareness which has come about. Hmm. Second is because it was a question of life and death at that time, Hmm. so, and our vaccines were the most visible thing which went from the country to many friendly countries in Africa, in Asia, and even in Europe and America. Hmm. So, it improved the standing of the country in the eyes of people worldwide. So, even the heads of the states, heads of the countries, they tweeted that India's Sanjeevani Booty has come and they thanked India, they thanked the Prime Minister. So it repositioned India as a global leader in vaccine production and in also pharmaceuticals. Right. And how much time did you take to research and, to complete the whole book? Yeah, it took about a year to research, write, and another 6 months to publish. Uh, and since it combines the whole history, was there in any incident about our vaccine growth story, which you were not aware, and during the research you found out and you were amazed about it, like you didn't know this? Of course, of course, I would love to talk about it. I was not aware of many things, but most important thing is that people world over think that vaccine was discovered Mm-hmm. by Edward Jenner. It Mm-hmm. was discovered in England, Mm-hmm. United Kingdom, and but that is wrong, I would say. Okay. In my opinion, and what the research tells me, vaccination was prevalent in India Mm-hmm. more than 2000 years before Jenner. It Okay. was okay, and we had tikadars, which we used to administer that tika, which Mm-hmm. vaccination called as tika. Mm-hmm. And what used to happen is that at that time, smallpox was very dreaded disease. It was very much prevalent. There were pandemics of smallpox happening every now and then. It was more dreaded than COVID-19. The mortality rate was very high. People used to get disfigured.
Hmm. People used to lose their eyesight. Hmm. So at that time, the Indian Tikadas, they used to collect the scabs and pus of the patients of smallpox. Hmm. They used to dry it for a year, Hmm. and by drying it, it attenuates the virus. It weakens the virus. So basic concept of vaccination or vaccine is that you weaken a disease causing organism, you Hmm. administer it in the body so Hmm. that the body gets to know the enemy, Hmm. but that enemy is not strong enough to cause the disease. Disease, So right. you get immunity Hmm. from that disease through this method. So Hmm. these tikadars, after a year in every season, after say before onset of rains, they would go to the rural areas, they would go to the villages and administer that tika by making a cut in the arm, then put that dried and powdered scabs and pus into that on the wound and tie it up with a bandage so Okay. that the virus will go inside the bloodstream and immunity will get developed. So this is really very startling fact which I was not aware that since prehistoric times India was leader in vaccination. Right, because we have been studying this Edward Jenner story. It is also, I think, related to that cowpox से वो Yes. smallpox का vaccination बनाया. But this was that we taught about. No, But it sir, was also very similar. Yeah, please yeah, go ahead. sir, this Tika Das you were mentioning, matlab, is that a person or a whole community? No, Tikadar was a community. Okay, The Tikadas were people who used to administer that tika. So it okay. was a whole community. They used to go to villages in groups before onset of smallpox Mm-hmm. epidemic every year, Hmm. and they used to administer. Like we have now vaccination drives, now. Right, So हाँ. that used to be a vaccination drive every year against smallpox in ancient India. Right. Okay. And now, sir, one thing about your literary journey. Like you wrote one story which is which is totally different. Like India's vaccine Mhm. growth story, and the second is about UPSC success stories. So ये वाला Yeah. जो transition है, how it happened, I am actually curious to know because both the subjects are totally opposite of each other. So, See, totally the opposite. hmm, And but while I was writing the first book, so then I got that I got interested in writing stories because उसमें भी छोटी छोटी stories हैं कैसे वैक्सीन अलग अलग डेवलप हुए hmm, और so I was looking for a good topic, I would say, hmm, for the second book. Obviously, you finish one book, then you start the other book. hmm, सो उस समय जो नए आईएएस ऑफिसर्स हैं रिसेंट बैचेस सो hmm, 2021 बैच इट वाज पोस्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया hmm, सो आजकल जो है इन द लास्ट लेग ऑफ देयर ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर्स आफ्टर फिनिशिंग देयर ट्रेनिंग इन मसूरी एकेडमी एंड आफ्टर देयर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग hmm, दे गेट पोस्टेड to government of India for 2 months as assistant secretary. right. So I was interacting with these people, especially those who were posted in Ministry of Finance. Hmm, And I really got interested in their stories because many of them were from very humble, normal families. और hmm, उसमें एक बच्चा था जो इसमें भी स्टोरी है लीव फ्रॉम सर्वेंट क्वार्टर टू बंगलो hmm, उसमें एक बच्चा है जो कि एक आईएएस ऑफिसर के जो डोमेस्टिक हेल्प के या सर्वेंट क्वार्टर पीछे होते हैं hmm. उसमें वो बच्चा पैदा हुआ था And now he. और उसी में वो बड़ा पला बड़ा उन्हीं डिफरेंट घरों में Mhm, और उसकी मदर डोमेस्टिक हेल्प का काम करती हैं अब करती थी mhm, और फादर भी पियोन एक स्कूल में है mhm, तो उस बच्चे को भी मैंने जाना कि वो बच्चा एक आईएएस ऑफिसर बन गया अपनी मेहनत से उसने इतनी हिम्मत की इतनी mhm, सेक्रीफाइस भी की एक टाटा मोटर्स में अपनी जॉब छोड़ के तैयारी mhm. की जो कि एक बहुत बड़ी बात है उस क्लास के बच्चे के लिए जो इतना डिप्रिवेशन में पैदा हुआ You're right. और ऐसे भी बातों बातों में बहुत सारी स्टोरीज सामने आई तो मेरे को लगा कि इनको एक अच्छा है सबको बताना चाहिए Mhm, मोटिवेट करना चाहिए तो ये mhm, ऐसी स्टोरीज हैं जो कि नॉर्मल हमारे जैसे आपके बच्चे जैसे बच्चे हैं जो बहुत ही नॉर्मल फैमिली से हैं कोई क्लर्क का काम कर रहा है कर mhm, रही थी एक बच्ची जो कि सेलेक्ट हुई कोई mhm, जो मैंने कहा सेवेंथ क्वार्टर में पैदा हुआ एक ब्लाइंड गर्ल है जो कि आईएएस में आ गई अपनी मेहनत से
तो हम्म इस तरह के बच्चे मैंने सेलेक्ट किए और मेरे को लगा कि इनकी स्टोरीज बताने से दो चीजें होंगी। हम्म पहली चीज ये होगी कि मोटिवेशन मिलेगा। जो बहुत बच्चे केवल सोचते रह जाते हैं कि हमको करना है, लेकिन वो डर जाते हैं एग्जाम का रिजल्ट देख के, हम्म उसका ड्यूरेशन देख के जो तैयारी का होता है। एंड सेकंड, व्हेन दे थिंक ऑफ अपियरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, दे आर टोटली इन डार्क कि क्या सिलेबस है, हाउ मेनी पेपर्स, हाउ मेनी मार्क्स, व्हाट हम्म टू स्टडी, हम्म क्या इसमें टिप्स हैं, किसके पास गाइडेंस के लिए जाएं। तो हम्म, पर्पस इज ड्यूअल पर्पस, बोथ मोटिवेटिंग चिल्ड्रन एज वेल एज गाइडिंग चिल्ड्रन टू हम्म। अपीयर इन सिविल सर्विस। Okay, so that's how I'm interested to know कि वो जो आप बता रहे थे क्वार्टर्स में बड़े हुए, who is that officer if you can, I think बुक में आ गई तो आप नाम तो बता ही सकते हो। हाँ, बुक में है, नाम भी है, भरत सिंह है जो अच्छा। मैंने बताया। द ओके। थर्ड चैप्टर ऑफ द बुक विच इज टाइटल लीव फ्रॉम सर्वेंट्स क्वार्टर टू बंगलो, ओके। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑन अ वेरी इमोशनल, आई वुड से, इंसिडेंट एंड वेरी शॉकिंग इंसिडेंट व्हेन दे वर evicted from the servants quarter of an IAS officer because that IAS officer was transferred and the quarter was vacant. So the rule was that you can't occupy servants quarter when the ओके। quarter itself is main bungalow is vacant. So ओ। at that time, that his mother, she resolved that one day my children will become officers and they will live in a bungalow. राइट। So that prayer was heard somewhere by the God, and हम्म। his son's hard work got rewarded. राइट। Also, सर ये जैसे इस तरीके की स्टोरीज, बिकॉज वी ऑल्सो स्टार्टेड इंडियन मास्टरमाइंड्स विद द सेम विजन, लाइक विल यू नो Mhm. डू स्टोरीज दैट विल इंस्पायर पीपल, बट एक हमेशा क्वेश्चन ये तो रहता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी एस्पिरेंट्स एंड ओनली फ्यू Mhm. गेट टू गेट हाँ, सेलेक्टेड, और उसमें yes, बहुतों के very सपने important. हाँ रह जाते हैं, बट दोज सक्सेस स्टोरीज एक्चुअली लीड टू पीपल जो 6 अटेम्प्ट या अपने लास्ट अटेम्प्ट तक देते चले जाते हैं एंड कुछ होता नहीं है। सो और बट वो एक Mhm. स्टोरी होती है, कभी आ जाती है 6 अटेम्प्ट में भी इन्होंने क्लियर किया तो फिर उनका होप बढ़ जाता है। इस तरीके से कई लोग हाँ। लटकते भी हैं बीच में, आई डोंट नो, हाँ यही कैजुअल में तो बीच में लटक जाते हैं, Mhm. उनकी उनके इयर्स बर्बाद होते हैं। तो उनके लिए अगर आप जैसे यू हैव टॉक टू सो मेनी, you every day you talk to so many officers and young officers also, what would you Mhm. say to them जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, and if you are not attending and then yet yeah they are stuck in their journey and not willing to move out? पहली बात तो देखिए, इसमें जो जर्नी है बहुत टफ है, हम्म कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एवरीवन नोज। हम्म लेकिन पहली बात तो कंपटीशन के डर के मारे छोड़ देना नहीं चाहिए, हम्म क्योंकि ये एग्जाम जो है ना, द प्रोसेस इटसेल्फ इज वेरी लर्निंग प्रोसेस। उसमें बहुत चीजें आप सीखते हैं। एक तो आपकी नॉलेज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी वास्ट नॉलेज हो जाती है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, हर सब्जेक्ट पढ़ना होता है, हम्म हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी आप देखें, करंट अफेयर्स। सो आपकी नॉलेज बहुत बढ़ जाती है। दूसरा, आपकी दूसरे स्किल सेट्स हैं, एनालिटिकल एबिलिटी है, घंटों बैठ के एक काम पे फोकस करने की जो क्वालिटी है, ये सब right बढ़ जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते वो, उनके लिए कुछ नहीं रहता है, उनके लिए बहुत कुछ होता है और बहुत सारे दूसरे करियर के दरवाजे भी खुलते हैं। हम्म दूसरा, जो आप कह रहे हो कि 4 अटेम्प्ट हो गए और लगे हुए हैं या नहीं हो पा रहा है, तो उनको एक एनालिसिस करना चाहिए। फर्स्ट तो अपना कहाँ वो स्टैंड कर रहे हैं इस एग्जाम में, किस स्टेज तक पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही प्रीलिम में ही फेल हुए जा रहे हैं फिर भी किए जा रहे हैं, ऐसा तो फिर आपको 2-3 अटेम्प्ट के बाद ये असेसमेंट हो जाता है कि आप कहाँ कितने पानी में हैं। हम्म लेकिन अगर आप सही में उस रेकनिंग में हैं जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट है कि आप कर सकते हैं, तब हम्म आपको टू एनालाइज योर फेलियर, कहाँ पे आपकी कमी हो रही है, कहाँ पे आप और अच्छा कर सकते हैं। क्या आपका आंसर का स्ट्रक्चरिंग गलत है, क्या आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, या ऑप्शनल सब्जेक्ट ही गलत सेलेक्ट कर लिया। तो हम्म वो एनालिसिस बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए, फेलियर्स का एनालिसिस, और उसके बाद उन फेलियर को दूर करके आप कर सकते हैं। तो ये मेरी बुक में जो है स्केलिंग माउंट यूपीएससी, हम्म इसमें दोनों के बच्चे हैं। हम्म इसमें 7 बच्चों में से 3 ऐसे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया, हम्म और 4 ऐसे हैं जिनको एक से ज्यादा अटेम्प्ट लगे।
श्रुति शर्मा को 2 लगे, लेकिन कुछ बच्चों को, भरत सिंह या मिन्नू पीएम, इनको 4-5 अटेम्प्ट लग गए। यस सर। लेकिन दोनों तरह के एग्जाम्पल हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। किसी का अगर 4 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो 5वें में भी हो सकता है, प्रोवाइडेड उसने ठीक से एनालिसिस अपना कर लिया हो। कर लिया, राइट। ओके, हम्म। एंड सर एट लास्ट, लाइक इतने सालों में गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग हैज चेंज्ड, तो इन योर एक्सपीरियंस व्हाट इज दैट वन थिंग जिसके लिए अभी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आईएएस आईपीएस ऑफिसर को प्रिपेयर्ड होना चाहिए इफ दे आर विलिंग टू कम इनटू दिस these kind of services? See, lot of things have changed. First is, now the methods of service delivery have changed. Methods to work for the people have changed. Mm-hmm. Methods to multiply your resources have changed. Right. तो अभी आपको, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट अभी भी वही है। आपको लोगों के हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए काम करना है, एजुकेशन के लिए काम करना है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना है, लेकिन टूल्स चेंज हो गए हैं और Mm-hmm. वो टूल और ज़्यादा बेटर हो गए हैं। आप ज़्यादा अच्छे से सर्विसेज दे सकते हैं लोगों को, तो उन टूल्स की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। Mm-hmm. टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, एनालिटिक्स बहुत अच्छे हो गए हैं अभी, जो पहले नहीं होते थे कि Mm-hmm. एक मैनुअल एनालिसिस होता था, मैनुअल डेटा कलेक्ट होता था। अब आप इतने अच्छे से डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं कि आपका इंटरवेंशन पहुंच रहा है कि नहीं। आप Mm-hmm. अपने स्कीम का कंकरेंट इवेल्युएशन कर सकते हैं कि मैं ये चला रहा हूँ, इसमें क्या कमियां आ रही हैं। Mm-hmm. तो स्पीड बढ़ सकती है। चेंज जो आप क्या बोलेंगे उसको, कि आप ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, ज़्यादा आप फ्रीक्वेंटली अपनी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो Mm-hmm. वो टेक्नोलॉजी का यूज़ जरूर बच्चों को करना चाहिए, चाहे वो सर्विस डिलीवरी के लिए हो, चाहे पॉलिसी एनालिसिस के लिए हो। तो वो चेंज हुआ है, लेकिन बेसिक चीजें जो है, जो बेसिक जरूरतें लोगों की हैं, वो सेम ही है। Same way. And do you think AI is going to impact the way of administration in our country or no? वी हैव टू पिक अप गुड थिंग्स। जो भी नई चीजें आती हैं उससे आपको अच्छी चीज लेनी है। एआई में भी बहुत अच्छी चीज हो Hmm. सकती है अगर वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, अगर Mm-hmm. आपको बेटर, आपका एडमिनिस्ट्रेशन बेटर करने में हेल्प कर रहा है, तो वो डेफिनेटली यूज करना चाहिए एआई टूल्स को भी, क्यों नहीं Mm-hmm. करना चाहिए। और इट विल लीड टू इम्प्रूवमेंट। अब Right. पहले कंप्यूटर आए, कंप्यूटर ने भी इम्प्रूवमेंट किया, Mm-hmm. उसके बाद और बेटर एनालिसिस आ गया, बेटर सॉफ्टवेयर्स आ गए, तो उनसे भी चीजें चेंज हुई। You're right. ईमेल आ गए। ईमेल भी एक रिवॉल्यूशन ही है कि पब्लिक कहीं से बैठ के आपको अपनी शिकायतें भेज सकती है। ऐसा नहीं है Right. कि उसका रिसीविंग ही नहीं दी जाएगी उसको। हाँ हाँ, right. उनको हम्म। ऑफिस नहीं आना पड़ेगा, या ऑब्वियसली बिकॉज ऑफिस आई। नहीं भी आना पड़ेगा, और कई बार ऑफिस में रिसीव नहीं होता था कागज, कि नहीं हम नहीं लेते, जाओ। तो हाँ। कोई रिसीट नहीं मिलती थी, कोई प्रूफ नहीं होता था कि उसने कागज दिया है। पर अब तो राइट। ईमेल है, उसमें डेट टाइम स्टैम्प है, कौन से ईमेल एड्रेस पे गई है। तो हम्म। हर चीजें, टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, उसको यूज करना चाहिए। उससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आती है, ज्यादा इफेक्टिवनेस होती है, एफिशिएंसी होती है। राइट। ओके सर, सो ऑन दैट नोट we'll stop राइट। our conversation. Thank you so much for your time. It was really थैंक यू nice वेरी talking. मच। या सेम है, थैंक यू। That was our insightful conversation with Mr. Sajjan Yadav. We hope you enjoyed it and discovered fascinating facts about vaccines and the world of bureaucracy. For more such engaging discussions, stay connected with us. Don't forget to like, subscribe, and keep watching our channel for more amazing content. Thank you for watching and see you next time.